Namaskar. Hello and a warm good morning from this colder part of North India. Myself Aditya Visaria, an educator, counselor and a speaker, takes pleasure to invite you all to this season 2 of Rapid Talks with Rachnaa, episode 3. 4. This pandemic has brought all of us together globally. So this is a boon, and this is the platform for educators and the parents who want to work for their child. And before moving ahead, let me just share a few words about FUN2LEARN. Under the leadership of Ms. Rachnaa Bhimrajka, FUN2LEARN started mental maths classes in 2005 with merely 18 students, which reached to 500 students in a span of 6 months by seeing the result of faster calculation, faster than a calculator. From 2012 to 2015, continuously received the award for Best Center, Best Franchisee, Best Faculty award at national level by giving maximum number of winner students. Ms. Rachnaa Bhimrajka herself is a renowned and known personality. She is founder of Global Educator Fraternity, National Vice President, Global Leaders Forum, coordinator of SAARC Regional Committee of Global Youth Parliament, Vice President, Maharashtra Women Indian Chamber of Commerce and Industry, National Advisor at World's Teachers Association, National Advisor of National Sport Academy of India, Corporate Associate of Association of Primary Education and Research, APA, President Shiksha Kalyan Foundation Maharashtra, and International Ambassador of Vishwa Samvad Parishad. With this, I would like to hand over to Ms. Rachnaa Bhimrajka to take this show ahead. Over to you, Rachnaa ma'am. Rachnaa ma'am. Okay, technical glitches are always there. No problem. Let me just carry on. Am I audible, sir? Yeah, now you are audible. Yes, you are audible. Technical glitches. So without delaying, I would like to carry on this episode of ours for achieving the objective with which I here. In the first two objectives, we have discussed about the skills of communication and handwriting. And today, the topic is mental maths. Maths is everywhere. When you are purchasing the furniture for your house, before purchasing, you should always remember the space which you are having, the size of the furniture, and the size of the door. So maths is everywhere in day-to-day calculations. And when it is mental maths or Vedic maths, it is fantastically a cherry on the top. So let's hear it out from today's discussion and topic. And today we have Mr. Vipin Kumar Tyagi, and Rachnaa ma'am is back. So over to you, Rachnaa ma'am. Thank you so much, sir. I think we have to change the timing because every last 3 Saturdays I am noticing that 11:30 sharp my net connection goes off. So from next Saturday, I think we will have to change the timing. A very warm welcome to my speaker guests, moderator, viewers at Rapid Talks with Rachnaa Series 2, an initiative by FUN2LEARN. And Aditya sir had already edified me, so I need not say much about it. I will just add on to one bit that everybody knows Rachnaa Bhimrajka and FUN2LEARN as handwriting expert. But my educational journey started with mental maths. 15 years back, from 2015, I started it from mental maths, and as he rightly mentioned, from 18 students. So in this tech-savvy world, let us see
how important is mental math till date. So for today's discussion, our main speaker guest is Mr. Vipin Kumar Tyagi. He is a principal of Kendra Vidyalaya Roorkee, having an experience of more than 3.5 decades as an educationist and working as a principal since 2012. He has received a KVS Regional Incentive Award, Water Hero Award from Government of India, and Paryavaran Divas Award from DM Haridwar. He have also received some award at national level from different organizations, and his school under his leadership got Swachhta Award, first ranking from Nagar Nigam Roorkee, and so on. His students also got a position at international level in painting at national level as academics as well as CCA activities. So, with a whole lot of offline activities in this tech service world, who can be a better person to talk about the skills? And moderator for Rapid Talk with Rachnaa series 2 is Mr. Aditya Bisaria. Before I give his introduction, let me tell you all this smart, handsome educationist has been awarded as the title of Edu Icon Mr. Motivation 2018. His educational qualification is that he is a managing director of Ganges School, founder director Ganges FUN2LEARN, educationist with over 17 years of experience and specialization in early childhood education. And he follows the educational guidelines led by Swami Vivekanand. So with this, I would just brief why we chose mental maths topic. Like as rightly said, many of them have a question that we have a calculator. Why do we require to do mental maths? So let us brief intro about Vedic maths. The name itself was derived from the word Veda. Veda means knowledge. Using regular mathematical skills, solving problems sometimes are very complex and time consuming. But by using Vedic mathematic techniques, numerical calculations can be done at very fast. It is a collection of techniques, sutras to solve mathematical arithmetic, and it was discovered by a great Indian mathematician Jagat Guru Sri Bharati Krishna Tirthaji in the period between 1911 to 1918. So over to you, Aditya sir, for the discussion on mental maths. Thank you. Thank you so much for this wonderful edification of mine. Thank you. So, without wasting time, over to you, Mr. Vipin Kumar Tyagi. So, Vipin sir, at the very outset, I would like to enlighten our viewers with the aspect of what are the advantages of learning Vedic maths. सर गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो आज का दिन हमारे लिए एक बहुत विशेष दिन है और मैं सभी को अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की शुभकामनाएं भी देता हूं। एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है आज जिसने हमारे देश को बहुत कुछ दिया और आज का दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पहले FUN2LEARN और रचना मैडम के बारे में दो शब्द कहूँगा। रचना मैडम एक बहुत नोबल जॉब करती हैं। इतना अच्छा एकेडमिक किसी का नहीं होगा जितना रचना मैडम का है। आपने हर फील्ड में बहुत अपना एक्सपर्टाइज दिया है और बहुत ही अच्छा वर्क आप कर रही हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं मैडम, आपने मुझे मौका दिया कुछ बात करने का। हालांकि मेरा ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं टच में होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात हम करते हैं तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है बच्चों के लिए जो बहुत ही स्ट्रेंथ सब्जेक्ट माना जाता है। बच्चे जैसे मैथ्स की बारी आती है तो बच्चे उससे डर जाते हैं। बच्चों को लगता है कि पता नहीं ये क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जब हम बात करेंगे मैथ्स की तो वो कहेंगे अरे सर सबसे मुश्किल काम तो मेरे लिए मैथ्स है। और जिस टॉपिक की हम आज बात कर रहे हैं मेंटल मैथमेटिक्स की, तो आज का स्थिति ऐसी है कि एक स्टडी ये कहती है कि हमारे जो 75.2% ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन ग्रेड 5
they can't get the subtraction of 3 digit by minus 1 digit problem. मतलब दे सब्सट्रैक्शन जो होती है उसको भी वो करने में बड़ी अजीब सा उनको लगता है. 73.7% of all children of grade 3 in India cannot subtract 2-digit problem with the borrowing numbers. Almost half of the British adult have a math skill of an 11-year-old child. 46.3 is the math pass rate in South Africa National Senior Certificate Examination. So it means that math is a national disaster in a country. We can say that the problem of this mathematics may be solved by Vedic mathematics or mental mathematics only. So it is a problem of the algebraic solution, or whenever we are solving the problem, suppose we are going to market and we are making a purchase, so then we get such type of problems. It is because of that we are not having mathematics in our head. We can learn, we can remember, we can have the mathematics max 99 or 100, but it is a problem for the math students that they can't get the mathematics in their head. That's why it is a problem for the mathematics for all. तो इस प्रॉब्लम का जो समाधान है, जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमें जब कोई सामान खरीदना होता है और उसने हमसे अगर कोई बात की कि आपको मैं ये सामान अगर आप इतना आइटम खरीदेंगे तो इतने रुपए में दूंगा, अगर आप एक आइटम खरीदेंगे तो इतने रुपए में दूंगा. तो बहुत सारे हमारे ऐसे नए बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि पता नहीं किसमें फायदा है. वो कहते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप सामान दे दीजिएगा. और कभी-कभी आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं किसी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के ऊपर, तो बच्चे एकदम से लेकर आते हैं कि लाइए मैं कैलकुलेटर से या मोबाइल से कैलकुलेशन करके अभी आपको बता देता हूँ. वो कैलकुलेशन सही है गलत है उसका उनको अंदाजा नहीं होता. लेकिन अगर आप पुराने लोगों के बारे में देखेंगे, इंडिया की जो पुरानी कल्चर है उसके बारे में देखेंगे, जो हमारी हेरिटेज है उसमें आप देखेंगे तो वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स को बिना पेंसिल पेपर के सॉल्व किया है. ये जो मैथमेटिक्स इन हेड, मतलब जो हमारे दिमाग का मैथमेटिक्स है उसका उन्होंने प्रयोग किया है. एक हमारे ह्यूमन कंप्यूटर हुई हैं शकुंतला देवी मैडम. तो शकुंतला देवी एक उस समय की ह्यूमन कंप्यूटर थी जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. इनका जन्म जो है 4 नवंबर 1929 को हुआ और इनकी जो एजुकेशन थी कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होते हुए भी इन्होंने जो सुपर कंप्यूटर थे उसको भी फेल किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कराया. जब ये इनके फादर सीवी सुंदराजा जो थे वो किसी सर्कस में काम करते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को जो जब वो ट्रिक्स बता रहे थे कार्ड ट्रिक्स, तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा कि उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है. उन्होंने उसको उसी तरफ बच्ची को डालने की कोशिश की, उन्होंने उसको मेमोराइज कराने की कोशिश की और उस बच्ची ने 3 साल की एज में जो नंबर्स थे उनको मेमोराइज कर लिया और कार्ड स्टिक से कार्ड ट्रिक्स जो थी वो उसने सीखी. और उसके बाद जब उसके फादर ने उसको रोड शो में ले जाने लगे और उन्होंने सर्कस का काम छोड़ दिया, तो वो केवल रोड शो में यही दिखाते थे कि उसकी एबिलिटी ऑफ कैलकुलेशंस क्या थी. और उसी के कारण उसने 6 इयर्स की एज में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में मैथमेटिक्स एबिलिटी जो दिखाई, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे जो मैथमेटिशियन बैठे हुए थे उनको भी वो सरप्राइज हुआ. और ये मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन उनकी थी, ये दीज कैलकुलेशंस वर ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स. तो वैदिक मैथमेटिक्स में जो रचना जी काम कर रही हैं, जिस पर इतनी अच्छी उनकी प्लानिंग है, जो बहुत अच्छी कैलकुलेशंस वो करती हैं, तो वैदिक मैथमेटिक्स या मेंटल मैथमेटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया हमारी मेंटल की मानसिक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन उनको सॉल्व कर सकते हैं. और यही शकुंतला जी ने किया जब सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेशन कराई गई और उन्होंने जो अपने माइंड से कैलकुलेशन की, तो उनकी कैलकुलेशन उस समय के जो सुपर कंप्यूटर्स थे उनसे फास्ट थी. तो ये वैदिक मैथमेटिक्स का करिश्मा है कि जब हम ये देखते हैं कि जो हम आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं या सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेशन करते हैं, उससे भी शार्प कैलकुलेशन हमारी
केवल मेंटल मैथमेटिक्स से हो सकती है। तो अब मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेंटल मैथमेटिक्स इज ए ग्रुप ऑफ स्किल्स दैट अलाउ द पीपल टू डू मैथ्स इन देयर हेड विदाउट यूजिंग pencil and paper or a calculator. It is useful in school and also in the life of everyone. It also helps kids to understand math concept better, and then they can get the answer faster. One of the skill is remembering math facts, and other skill include rounding numbers and estimating calculations. Mental math is useful in everyday life to answer the question like what is and what and how we will get the correct amount. So mental math regularly helps the kids to improve their number sense. It is useful in other ways also. It keeps math facts from getting rusty. It can also help getting the solving math problem in an easy way. That is, for example, if we want to add a calculation, for example, 48 plus 37, then we can break it into 40 plus 30, that is 70, and 8 plus 7, 15. Then 70 plus 15, it will become 85. There is no need of calculating it with the pen and pencil or paper. So we can solve it in our mind also. So mental mathematics require strong memory skills. Math, facts, and other concepts also have to retrieve from the long-term memory of our brain. Our brain also use a skill called working memory to keep the track of the steps needed to solve a math problem. Kids develops a math skill at their own pace. Differently with the mathematics could be a matter of needing more time and practice to catch up. Doing mental mathematics require strong memory skills. It has regularly practicing mentally math can help improve our other skill also. Trouble with mental math can be a sign that kids needs more support to get better at mathematics today. Wow, well said, Vipin sir. What you have highlighted is really wonderful. And let me update my viewers what all he has not only shared out what are the advantages of Vedic mathematics, वैदिक मैथमेटिक्स लाइफ में क्यों जरूरी है, और ये भी बता दिया कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में भी वैदिक मैथमेटिक्स के अस्तित्व बना रहना चाहिए. Why? Because whether the calculation done by the calculator is right or not, how will a person come to know? Because if the input is wrong, अगर आपका इनपुट गलत हो गया है तो आउटपुट भी गलत हो जाएगा. सो कैलकुलेटर के साथ एरर के चांसेस हैं, बट आपके माइंड के साथ एरर के चांसेस नहीं हैं. सो त्यागी सर ने ये बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, विपिन सर ने. एंड सेकेंडली जो इन्होंने ये बताया कि हमारे 75% ऑफ द चिल्ड्रन 3 डिजिट की भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं. इट मींस कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन वो पीछे छूट रहा है. टेक्नोलॉजी हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए एज देना चाहिए, ना कि हमारी स्किल्स को कमजोर करने के लिए. दैट इज व्हाट त्यागी सर हैज जस्ट मेंशन्ड आउट. एंड नॉट ओनली दिस, along with this he has also answered to this question कि हम लोग को मेंटल मैथमेटिक्स के लिए और वैदिक मैथमेटिक्स के लिए क्यों अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए. बिकॉज ये हम लोग को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाएगी, और इसके थ्रू शकुंतला देवी का जो एग्जाम्पल दिया है उससे ये समझ में आ रहा है कि उसको मैथमेटिक्स करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, और उससे ही हमारा लाइफ में प्रोग्रेस ग्राफ कहीं भी जा सकता है. नाउ मूविंग अहेड, विपिन सर आपसे अब एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, व्हाट इज द करेक्ट एज ऑफ स्टार्टिंग द लर्निंग ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स. हमारे एजुकेटर्स और व्यूअर्स इस समय ये जानना चाहेंगे कि कौन सा सही उम्र है इसको शुरू करने का. देखिए, हम जो वैदिक मैथमेटिक्स की बात जब करते हैं सर, तो हम बचपन से ही बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं.
जैसे मैंने अभी बात की शकुंतला देवी की। शकुंतला देवी ने जो अपना मैथमेटिक्स स्किल दिखाई थी वो 3 साल की एज से दिखाई। उसने 3 इयर्स से स्टार्ट किया बिना फॉर्मल एजुकेशन के, और उसने वो कंसेप्ट इस तरह से याद की, वो ट्रिक्स इस तरह से याद की कि वो मैं पूरा का पूरी कैलकुलेशन उसके माइंड्स में थी। और लोगों ने जब देखा कि नहीं नहीं, वो सुपर कंप्यूटर से उनकी जब तुलना कराई गई, जब कंपैरिजन कराया गया, जब कैलकुलेशन की उनकी क्षमता देखी गई, चेक की गई, तो ये पाया गया कि उन्होंने उसका जो कैलकुलेशन उनकी थी, जो करेक्ट फिगर्स थी अप टू डेसिमल्स, वो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट थी। तो हमें अगर वैदिक मैथमेटिक्स को शुरू करना है तो हम बच्चों को स्टार्टिंग से इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। हम बच्चों को एलिमेंट्री जो हमारी एजुकेशन है क्लास 1 से, या क्लास 1 से पहले भी हम उसको करा सकते हैं। ये ट्रिक्स हमें बच्चों को बतानी होगी, उनको रिमेम्बर कराना होगा। पुराने समय में आपको भी याद होगा सर, हम लोगों को भी याद है कि जब हम लोग क्लास में जाते थे तो हमें टेबल्स याद कराई जाती थी। वो टेबल्स याद कराने का जो कंसेप्ट था, तो वो केवल यही था कि हम जो कैलकुलेशन जो करते हैं कैलकुलेटर से या पेन और पेपर से, उसको बचाकर हम कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जो हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं। तो हम लोग अगर अपनी एजुकेशन में वैदिक मैथमेटिक्स को अपना लें, अगर हम इन कैलकुलेशन को अपना लें, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से हमारे आसानी हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। हम कहीं भी अपनी कैलकुलेशन को के लिए कहीं कैलकुलेटर पर डिपेंड नहीं करेंगे, कहीं कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करेंगे, और हमारे बच्चे सही कैलकुलेशन करके अपने बहुत सारे लाइफ के जो डिसीजंस हैं, बहुत सारी जगह जहाँ चीटिंग हो सकती है, हम देखते हैं बहुत सारी चीटिंग हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो वो सोल्व हो सकती हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं कि आपको वैदिक मैथमेटिक्स जो है अपने मैथमेटिक्स का पार्ट बनाना होगा, और जैसे रचना मैडम भी अपना कराती हैं, तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बच्चों को अगर हम प्रोवाइड करें एजुकेशनल सिस्टम में, तो वैदिक मैथमेटिक्स के वजह से बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो उनका जो डर है मैथ्स का वो निकल जाएगा, और हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। उत्तम। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, आपने जैसे टेबल्स के बारे में बताया, क्या उसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, मतलब कि मानसिक जो हमारी बढ़ोतरी होती है बच्चों की, क्या कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करने के पहले पूरा हो जाना चाहिए, या ऐसे ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है? नहीं, उसके लिए कोई ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एजुकेशनल सिस्टम में ऐसी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके पहले हम कुछ करें, क्योंकि ये तो काउंटिंग से स्टार्टिंग होता है। ये एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, इसमें 16 सूत्र हमारे दिए हुए हैं। अगर उन सूत्रों को हम यूज कर लेते हैं, उन कैलकुलेशंस को हम यूज कर लेते हैं, तो ये तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम जब स्टार्टिंग करते हैं बच्चे की एजुकेशन सिस्टम में, हम उसको एंटर कराते हैं बच्चे को, तो उसी समय हम जो नॉलेज बच्चे को देते हैं नंबर सिस्टम की, उसी के साथ हम इसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे बच्चों के लिए बच्चा मैथमेटिक्स का डर निकाल पाएंगे। तो ये कोई इसके लिए कोई ऐसी एजुकेशन की नीड नहीं है, ये कभी भी हम शुरू कर सकते हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स का मैं देख रहा था जो इनका सिलेबस सिस्टम है, वो सिलेबस सिस्टम भी इनका क्लास 1 से स्टार्ट होता है कि वो क्लास 1 में इतना हमें सिखाना है, क्लास 2 में इतना सिखाना है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम स्टार्टिंग से ही सिखा सकते हैं। जो आपसे बातचीत हो रही है और जो आप व्यूज बता रहे हैं, उससे अगर मैं समझूं तो वैदिक मैथ आपके हिसाब से वैदिक मैथमेटिक्स बच्चों के दिल और दिमाग से मैथ्स का डर भगाने में हेल्पफुल रहेगा, सहायक होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैथमेटिक्स का जो फियर है बच्चों से, फियर नहीं है जो बाकी हम मैथ्स पढ़ाते हैं, जो हम एजुकेशनल सिस्टम का मैथ्स पढ़ाते हैं, उससे बच्चों को डर नहीं है। बच्चा उसको तो रट लेता है, रटने के बाद उसको सोल्व कर लेता है, लेकिन वो लाइफ में कहीं काम नहीं आता है। जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये लाइफ में जो हमारी डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं उनमें काम आता है, हमारी कैलकुलेशन में काम आता है, हमारे माइंड को शार्पन करता है। ये केवल मतलब मैथमेटिक्स में नहीं, मैनेजमेंट में भी, इंजीनियरिंग में भी, बैंकिंग में भी, फाइनेंस में भी, और इवन लॉ में भी। तो ये हमारा हर फील्ड में काम आता है, और इसकी संभावनाएं हर जगह पर है। अगर हमारे ये कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होंगी
तो हम बहुत सारे जो मशीन्स पर डिपेंड करते हैं, जो हम कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं, जो चीजें हम उन पर करते हैं, जो कैलकुलेशन वहां पर हम करते हैं, वो कैलकुलेशन बड़ी फास्टर हो जाएंगे और हमारे माइंड में रहेंगे, हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद आपसे एक अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा। आजकल कोडिंग बहुत आ रहा है, तो वैदिक मैथमेटिक्स क्या कोडिंग को भी इजी करेगा लर्निंग में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो कोडिंग है सर, ये जो शुरू किया गया है, जो कंप्यूटर की जो भाषा है, वो केवल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड भाषा है। जो उसमें हम लोग यूज करते हैं, जो फॉर्मूले उसमें भी यूज किए हुए हैं, वो उसी तरह के जैसे हमारे माइंड में फॉर्मूलेज होते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स तो बेस्ड है इसी तरह से, कंप्यूटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। और यही वजह था कि शकुंतला देवी ने सुपर कंप्यूटर को फेल किया, क्योंकि वो कैलकुलेशंस उस तरह की होती हैं जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी वो फीड होता है। तो हमारा ब्रेन तो बना हुआ ही कोडिंग से। हम लोग तो कोडिंग अब सीख रहे हैं कंप्यूटर में, लेकिन ये तो हमारे ब्रेन में है। और हमारा जो हेरिटेज है, हमारे जो पुराने गणितज्ञ हुए हैं, जो मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी ये पहले से प्रूव किया है। आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की एस्ट्रोनॉमी में। और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, उनकी इतनी अच्छी कैलकुलेशन है, आज भी मैथमेटिक्स फेल हो जाता है उनके सामने। तो उनके जो माइंड में था वो केवल वैदिक मैथमेटिक्स ही था। तो उन्होंने उसी से वो कैलकुलेशन की, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशन की, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में लाइफ की कैलकुलेशन की, और ये सारा कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो कैलकुलेशन आज हम जब देखते हैं, कंप्यूटर से हम अपनी जन्म पत्री बनाते हैं, जो लेकिन हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो तो जो बिना गणित उसे देख के कंप्यूटर के बना लेते थे, और उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होती थी कि लोग हैरत मान जाते थे। तो जर्मन में भी आपने देखा होगा, जर्मन ने जितनी अपनी साइंस का डेवलपमेंट किया, वो हमारे यहीं से जो वैदिक वेद से, उन्हीं से उन्होंने पढ़कर उन्होंने स्टडी किया, और उन्हीं से उन्होंने कैलकुलेशन की। हमारे जो चरक को पढ़कर बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी मेडिसिन में जो रिसर्चेस की हैं। तो हमारी जो हेरिटेज है जो वैदिक मैथमेटिक्स की, ये बहुत पुरानी है और इतनी सटीक है कि इसको आज भी कंप्यूटर जो है नहीं फेल कर पाए हैं। तो कंप्यूटर कैलकुलेशन से तो बहुत बेहतर हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस हैं, और मुझे लगता है कि हमारे हर फील्ड में ये हेल्प करे। एक्सलेंट एग्जाम्पल्स विपिन सर, जो आपने हाईलाइट किए हैं एग्जाम्पल्स, डेफिनेटली ये हम लोग के लिए एक आई ओपनर है कि वैदिक मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको स्कूल करिकुलम में जगह दी गई है, and this is a really good news. So parents and teachers who all are listening to us, please understand coding नई चीज नहीं है, it is already there. हम लोग by default अपने brain में कर रहे थे, और उसी के सहारे हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी calculations और estimations करी हैं. So it is already there with us. It's just that we are making it a little bit fast and advanced and passing it on to our next generation. Similarly, important point is कि वैदिक मैथमेटिक्स हमारी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल कर सकता है. दैट इज व्हाट द रीजन इज इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 70 इयर्स में, वो फिनोमिनल है. थैंक यू सो मच विपिन सर फॉर हाईलाइटिंग दिस. एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू मैथ्स टीचर्स और हमारे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स के लिए कैसे मोटिवेट करें और कैसे पढ़ाएं? देखिए, जहाँ तक हमारे टीचर्स की बात है, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को चाहते ही हैं कि उनको बेस्ट एजुकेशन मिले, और हमारे टीचर्स के भी ये दायित्व बनता है कि वो मैथमेटिक्स का जो डर है बच्चों के मन से हटाएं। और मैथमेटिक्स का डर जो है, इसलिए इस तरह नहीं हटा सकते कि हम उनसे कहें कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करिए, कंप्यूटर से करिए। उसके हटाने के लिए उनको वैदिक मैथमेटिक्स की तरफ जाना होगा, उनको वो ट्रिक्स बतानी होंगी, उनको वो 16 जो सूत्र हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, वो बताने होंगे कि आप इस तरह से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो दूसरे एग्जाम हो, उनमें जो सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आती हैं, तो बच्चे उनमें भी बिना ट्रिक्स के सोल्व नहीं कर सकते। जो बच्चा ट्रिक्स जानता है, जो वैदिक ट्रिक्स जानता है, जो उनको सोल्व कर लेता है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर निकल जाता है। जो बच्चा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं कर पाता, वो कैलकुलेट करता हुआ रह जाता है। तो आज के समय में
इस वैदिक मैथमेटिक्स की इतनी जरूरत है हमें। अगर बच्चे का माइंड शार्पन करना, बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, बच्चे को इंटेलेक्चुअल बनाना है, बच्चे को एक सफल और सक्सेसफुल पर्सन बनाना है, तो उसको वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ाना ही चाहिए। हमारे टीचर्स को भी वैदिक मैथमेटिक्स को जानना चाहिए, और उन बच्चों के स्टार्टिंग में जो मैथ्स का डर बैठता है उसको हटाने के लिए भी जरूरी है कि वो वैदिक मैथमेटिक्स उनको बताएं, वो सूत्र बताएं, उनको सिंपल कैलकुलेशन बताएं, उनको ये बताएं कि इस एडिशन के लिए जरूरी नहीं कि आप एक कैरीड ओवर करें, आप उसको इधर से कैरी करें उधर लेकर जाएं, उस लाइन खींच कर ऐड करें। तो ये लाइन खींच कर या उंगलियों पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में अपने आप ऐड हो जाएगा अगर हमको सिंपल सूत्र बता देते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स अगर हम उनको पढ़ा देते हैं तो ये चीजें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे को कभी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम दुकान पर जाते हैं, पुराने किसी दुकानदार को देखते हैं, तो सर वो कभी कैलकुलेशन नहीं करता, कभी कैलकुलेटर का यूज नहीं करता। आजकल के जो बच्चे शॉप पर बैठते हैं वो अपने सामने जो कंप्यूटर लेकर बैठते हैं, वो कैलकुलेशन के लिए बार बार कैलकुलेटर का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उनको हैंडीकैप बना दिया, हमने उस नई पॉलिसी में उनको ऐसा बना दिया कि वो सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, सिंपल सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यदि उनको भी उनके टीचर्स ने थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो जब हमारे बिना पढ़ने वाले जो लोग हैं, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन भी इतनी नहीं हुई है, वो अगर इतनी अच्छी कैलकुलेशन अपने माइंड से कर सकते हैं तो ये हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। केवल हमारे टीचर्स की ड्यूटी की जरूरत है कि वो उनको वैदिक मैथमेटिक्स बताएं कि वैदिक मैथमेटिक्स है क्या, कैसे हम इसको इजीली कर सकते हैं और हमारी लाइफ कैसे इजी हो सकती है अगर हम इसका यूज करें। वंडरफुली सेड। एंड आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमें बच्चों को समझना है और उनकी दिक्कतों को जानने के बाद उनकी दिक्कतों को रिमूव करने पे वर्क अपॉन करना है, उनको 16 सूत्रों से अवेयर करवाना है, और टेक्नोलॉजी के हैंडल करते वक्त उन्हें हैंडीकैप महसूस नहीं करवाना है, उन्हें एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील करवाना है। एंड देयर इज वन क्वेश्चन which has come from Mrs. Rachnaa Jain. So, Vipin sir, is abacus and Vedic maths different or same? What sir? Vedic maths abacus और Vedic mathematics ये एक है या अलग है? आपके क्या विचार हैं? Actually, in some cases it is also some having difference, but almost the base is same. दोनों में मतलब मेन जो बच्चों का है उसमें माइंड के ट्रिक्स के ऊपर है, माइंड को शार्पन करने के लिए ये एक्टिविटीज है हमारी। So with this I would now ask Mrs. Rachnaa Bhimrajka for two things. Number one, she has an experience of over 15 years for mental maths. If she would like to highlight few points over that, and secondly, any of your views which you would like to add on so that our educators and listeners are getting more thoughtful empowerment. Over to you, Mrs. Rachnaa. I guess technical glitches are there. It would have been great if we would have been able to hear it out from her. Few things which I would like to add on what Vipin sir has already added in that, just few points more to add on. Number one, yes, Vedic mathematics is very, very helpful, and it is the foundation through which India has been the edu leader throughout the ages, since ages, and has enlightened the world. I guess Rachnaa ma'am is back. Rachnaa ma'am, are you there? Yes, sir. So we were all eager to hear out few points about you also, from you also on Vedic mathematics, because you are having an experience of more than 15 years. So would you like to add on something? Definitely, sir. First question which I saw in the chat box was, what is the difference between abacus and Vedic math? So I would like to add on, since Vipin sir is the school principal, so he might not be knowing the actual difference. I have been dealing with abacus and Vedic math since last 15 years. So let me just explain you all the basic difference. Abacus is basically, we start abacus from the age group of 5 years, which goes on till 10 years.
5 years to 10 years of age group is very much beneficial for abacus, because they will use an instrument called abacus. There is a misconception that abacus is the name of a program. The instrument name is abacus, and on that we teach to the kids with the beats, the playful way to read the numbers and to simple calculations like addition, subtraction, multiplication, and division. But Vedic math is beyond that. In Vedic math, we can do square, square roots, cube roots, Pythagoras theorem, beat, any type of calculations, algebraic expressions. So that is the difference. So initially, once the child start knowing the numbers, when the child starts knowing the numbers, we have to make the child friendly with the numbers. Like maths phobia नहीं होना चाहिए, जैसा कि विपिन सर ने इनिशियली बताया कि आज के टाइम पे जैसे जैसे बच्चे सेकेंडरी में जाते जाता है, मैथ्स का एक फोबिया होते जाता है. अरे मैथ्स तारे जमीन पे है में जैसे अल्फाबेट्स होता था, वैसे बच्चों के माइंड पे होता है. सो अगर हम बच्चों का बेस इंसेप्शन से मैथमेटिकल अबैकस देन वैदिक मैथ्स करते हैं तो वो एक डर निकल जाता है. सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, जैसा कि सर ने बताया टेबल्स लर्न करना. Now in like our school based conventional method is that we always believe in the rote learning method. Tables को daily का 4 बार लिख दे, 4 बार learn करो, and then we believe in rote learning. Rote learning में बच्चे कितने tables तक learn कर सकते हैं? Maximum 20. Most of, see, my past experience of 15 years says कि बच्चों को 10th standard के बच्चों को in remote areas they even don't know 8-9 का tables. So Vedic maths helps kids to write down the tables, any 2-digit tables till 99 without learning in fraction of seconds with 100% accuracy. We have had students who were failing in school maths, like they used to get 15 or 20% marks. Within 3 months of joining the Vedic maths classes, they have started not only topping the school but topping their respective states. So that is the benefit. When the kids start getting the correct answers, they become more confident, and when a child is more confident, the phobia goes away. So each small steps, like after so many years, the new education policy, maybe हमारे mathematical skills and writing skills पे हमारे honorable Prime Minister मोदी जी ने emphasis किया है that learning should always be fun. Now we all know addition and subtraction because we learn in a fun learning way. But does anybody of us remember, except the maths teacher, do we all remember what is Pythagoras theorem? What is the formula for calculus or integration or mensuration? We don't know. So learning in a playful method, making the child confident, is what Vedic math is all about. And जो calculator का बातें हो रही थी, like today my net is giving me a lot of problems. So what I could hear in bits and pieces about the coding aspect, about the using the gadget. Let me tell you कि अगर हम वैदिक मैथ्स हर स्कूल्स में इम्प्लाई करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, आप कैलकुलेटर में उतना फास्ट नहीं टाइप कर पाओगे नंबर्स, एंड द चाइल्ड कम्स अप विद द आंसर. इज द पावर ऑफ वैदिक मैथ्स. सो गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, everything is after Vedic math. So let us all prepare our kids with Vedic math, mental math, whether it be abacus, Vedic math, and not, we shouldn't have just 1 or 2 Shakuntala Devis. All let us prepare our future generation as human calculator. And मैं एक और चीज I would request, yeah. एंड एक और चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कल मैंने एक हार्ट केयर फाउंडेशन में डॉक्टर के अग्रवाल, ही इज अ पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर, उनके वहां पे मैंने वैदिक मैथ्स का प्रेजेंटेशन दिया था. वहां से मुझे एक नई चीज पता चली है. सो आई वुड लाइक टू शेयर, नॉट ओनली फॉर द किड्स, फॉर द एल्डरली पीपल, 40+ पीपल ऑल्सो वैदिक मैथ्स इज वेरी मच हेल्पफुल. 40+, there is a disease like dementia and Alzheimer disease, जहाँ पे आपका memory loss होने लगता है, you start forgetting things, mental disorder शुरू होता है after 40+, 50+. So if you do Vedic math at any age, at the age of 40+ also, if you learn and you start teaching your grandkids or your kids, it will help you in that mental disability also. So not one, we have lots and lots of advantages of mental math. If your kids are small, go for abacus. If your kids are into
third standard and above go for Vedic math, but this is a technique, this is a lifelong investment for our kids. We invest in expensive schools, yes, that is required, but investing in making your kids human calculator rather than buying an apple, make your child a human calculator is what I will say. And thank you so much, Vipin sir, for your insightful knowledge. Although आपके स्कूल को करिकुलम के हिसाब से चलना पड़ता है, but I have always seen your keen interest in the co-curricular activities, whether it be handwriting or Vedic math. So thank you so much. And as you always, Aditya sir, thank you for being such a wonderful host. See you all next, and thank you all my guests, viewers who have joined us on Zoom, YouTube, and Facebook. Thank you for attending, and do enroll your kids for Vedic maths and abacus classes. And if you are running a school, do try to include this as part of the school curriculum. With this, thank you so much. Namaste. We see you all next Saturday, and hopefully with a different timings. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you.